स्क्रीन शो हो रही है मेरी? एक मिनट। स्क्रीन शो हो रही है? यस मैम। ओके, तो यूनिट 1 हमने देखे थे। zoo 1 में यूनिट 1 इज पॉपुलेशन इकोलॉजी, जिसमें 4 टॉपिक्स है: पॉपुलेशन डायनामिक, ग्रोथ रेगुलेशन एंड ग्रोथ पैटर्न, and last one is a human census. Okay, next is a ecosystem. मैंने इकोसिस्टम भी थोड़ा सा एक्सप्लेन की थी। कंसेप्ट ऑफ इकोसिस्टम, कंसेप्ट देखे थे हमने, जिसमें उसके कंपोनेंट्स देखने। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स। व्हाट आर दे? कौन से कंपोनेंट्स देखे थे हमने? Ecosystem means biological community of interacting organisms and their physical environment is called as the ecosystem, right? This is the definition of ecosystem. And what is the component? दो टाइप्स थे हमने कंपोनेंट के देखे हुए, कल ही मैंने एक्सप्लेन बायोटिक किए। में अबायोटिक Yes, कंपोनेंट। biotic and abiotic components. So biotic means living components, जिसमें सारे living components आते हैं, means producer, consumer, decomposer, right? And abiotic means वहाँ पे non living components आएंगे, means air, water, wind, soil, temperature, then rainfall. These are the abiotic component. Okay, तो हमको उसमें definition देखना है, उसका components देखने हैं. Next is the impact of temperature on biota. So the biota means the plant life of particular regions, or we can say the habitat. तो वहाँ पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, टेम्परेचर का बायोटा पे इम्पैक्ट क्या होता है, तो वो देखना है. नेक्स्ट इज अ बायोजियोकेमिकल साइकिल. तो यहाँ पे 4 टाइप्स के साइकिल्स पढ़नी है. वाटर साइकिल है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर साइकिल. ओके, तो नेक्स्ट इज अ फ्रेश वाटर इकोसिस्टम. फ्रेश वाटर इकोसिस्टम जिसमें लैंटिक है और लॉन्टिक है. तो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम आर अ सबसेट ऑफ अर्थ aquatic ecosystem, and they include lake, ponds, rivers, streams, spring. Okay, wetlands. They can be constructed with marine ecosystem which have a larger salt content. Okay, और the term लैंटिक जो है वो लैटिन वर्ड है, लैंटिक और लॉटिक. तो लैंटिक मीनिंग flow or motionless. Lentic means what? It's a Latin word and it means slow and motionless, and it's referred to as standing water such as lake and ponds. Okay, and lotic means washing and refer as a running water. Washing meaning क्या है lotic के? Washing, and it is also Latin word. It means washing or running water, refer to a running water. तो यहाँ पे फ्रेश वाटर इकोसिस्टम पढ़ेंगे हम लोग. नेक्स्ट इज अ फूड चेन एंड फूड वेब इन इकोसिस्टम. फ्रेश वाटर भी है और ग्रास लैंड, दोनों टाइप्स है यहाँ पे, फ्रेश वाटर भी और ग्रास लैंड भी. सो द फूड चेन इज अ लीनियर सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स, है ना, एक सीक्वेंस होती है, लीनियर सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म विच स्टार्ट फ्रॉम द, स्टार्ट कहाँ से होती है? एनीवन नोस? फूड चेन इज स्टार्ट फ्रॉम द प्रोड्यूसर ना, यस और एंड मैम। कहाँ पे होगी? हाँ, और एंड कहाँ पे होती है? स्टार्ट फ्रॉम द डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर एंड यस डीकम्पोजर. इतना इजी क्वेश्चन. Food chain is a linear sequence of a organism which start from the producer organisms means and end with a decomposer species. Okay, and food web is connection of multiple food chains. यहाँ पे फूड चेन भी दी हुई है और फूड वेब भी दी हुई है ना. तो दोनों में डिफरेंस क्या है? फूड चेन जो होती है वो लीनियर सीक्वेंस में होती है, वहाँ पे लीनियर सीक्वेंस होंगी ऑर्गेनिज्म की. वो स्टार्ट फ्रॉम द कहाँ से हो रही है? प्रोड्यूसर से, एंड एंड ऑन डिकम्पोजर. एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब? वहाँ पे लीनियर सीक्वेंस है, यहाँ पे पूरा कनेक्शन होगा. मीन्स फूड चेन, फूड वेब इज अ कनेक्शन ऑफ मल्टीपल फूड चेन. वहाँ पे फूड चेन
क्या होंगी? फूड चेन, फूड वेब मीन्स फूड चेन का बहुत सारा कनेक्शन एक साथ, नेट लाइक। ओके, सो फूड वेब इज अ कनेक्शन ऑफ मल्टीपल फूड चेन। आया समझ में सबको? Yes, ma'am. नेक्स्ट इज अ इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड में हमको क्या करना है? एनर्जी, बायोमास एंड नंबर, ये सब Screen पढ़ेंगे। is not ओके, visible. next is a animal interaction. So interaction, communalism, mutualism, predation, antibiosis, or a parasitism. So animal interaction, interaction means between species to species. यहाँ पे जो interaction हो रहा है, animal interaction मतलब between species to species, refer to a positive and negative association between species that favor, or we can say that inhibit mutual growth and evolution. मैम स्क्रीन नहीं दिख रही है। अभी हाँ मैम अभी दिख रही है। ओके, so last one is animal interaction. एनिमल इंटरेक्शन बिटवीन स्पेसिस टू स्पेसिस, यहाँ पे जो इंटरेक्शन होगा वो स्पेसिस टू स्पेसिस होगा, between species to species, and refer to a positive and negative association between species that favor and, or we can say that inhibits the mutual growth and evolution of population. Okay, and it may take the form of competition, predation, parasitism, communalisms, or mutualisms. Okay, next is a national park, नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज ऑफ इंडिया। ओके, यूनिट 2 जो है इकोसिस्टम था, लास्ट यूनिट ऑफ जू 1 इज नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, थोड़े से नेशनल पार्क्स पढ़ने, मीन्स concept of endangered and critically endangered species. What are the critical endangered species? A species facing on extremely high risk of extinction in the wildlife. ओके, जो बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन होने आए हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? इंडेंजर्ड और क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पेसीज। ओके, an endangered species considered to be facing a very high risk of extinction in the wild. So यहाँ पे हमको क्या पढ़ना है? concept of endangered and critically endangered species using example of India. तो एग्जाम्पल भी देखनी है कौन से स्पेसीज है जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, वाइल्ड लाइफ रिस्पेक्ट टू द नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ इंडिया। सम यहाँ पे कुछ पार्क्स के नेम दिए हुए, लाइक संजय गांधी नेशनल पार्क, टाडोबा टाइगर रिजर्व, देन कॉर्बेट नेशनल पार्क है, काजीरंगा नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, साइलेंट वैली, Pyroten Iceland Marine Park, then Culadeo Ghana National Park, and last is the Bandipur Sanctuaries. Okay. Next is the management strategies with species refer to a tiger and rhinoceros in India. Next is the ecotourism. So, what is mean by ecotourism? Anyone knows? Ecotourism means responsible travel to natural area. Okay, ecotourism means responsible travel to natural area that conserve the environment, जो conserve करते हैं environment को, sustain the well-being of the local people and involve the interpretation and education is called as a ecotourism. Okay, समझ में what is mean by ecotourism? Since it's responsible travel to natural area that conserve the environment, sustain the well-being of the local people, and involve interpretation and educations. And next is the biopiracy. So biopiracy means the commercial exploitation.
और वी कैन से द मोनोपोलाइजेशन ऑफ बायोलॉजिकल और जेनेटिक मटेरियल। वहां पे क्या होगा, कमर्शियली एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है जेनेटिक मटेरियल्स का। इट्स कॉल्ड एज अ बायोपायरेसी, लाइक अ मेडिसिनल प्लांट एक्सट्रैक्ट, है ना। हम लोग अगर प्लांट को मेडिसिनल पर्पस पे यूज कर रहे हैं, फर्नीचर्स के लिए यूज कर रहे हैं, या फिर कुछ भी जो भी किसी ना किसी चीज के लिए हम क्या कर रहे हैं वहाँ पे एक्सटिंक्ट कर रहे हैं ना प्लांट्स को। जैसे कि मेडिसिनल प्लांट एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम लोग वहाँ पे प्लांट को कमर्शियली एक्सप्लॉइट करते हैं। तो एक्सप्लॉइटेशन और मोनोपलाइजेशन ऑफ बायोलॉजिकल और जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड एज अ बायोपायरेसी। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। समझ में आया सबको? यूनिट थर्ड, नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज ऑफ इंडिया। So this is your zoo मैम first syllabus. Next is a zoo second. इसका भी syllabus मैं explain करती हूँ अभी। So first is a nutrition and health. Unit one is a nutrition and health. The first topic is a concept of balanced diet. है ना? It is very important. Balanced diet is very important, right? In healthy diet, because healthy diet include the less than 10% of total energy intake from free sugar. तो हमको यहाँ पे बैलेंस डाइट जो है वो पता होनी चाहिए। मीन्स जिसमें डाइटरी रिकमेंडेशन आता है कि नॉर्मल पर्सन को कितना इंटेक करना चाहिए, शुगर कितना लेना चाहिए, डाइट कैसा, रेगुलर डाइट पे क्या इंटेक करना चाहिए, देन इन्फेंट के लिए कितना होना चाहिए, एडल्ट के लिए कितना है, फॉर द प्रेग्नेंट वुमन एंड एज। So this is topic first, means concept of balanced diet, dietary recommendation to a normal adult, infant, pregnant woman and aged. Next is a malnutrition. Malnutrition disorder, तो सबको पता है what is malnutrition disorder, means it refer to getting too little or too much of certain nutrients, and it can lead to serious health issues, है ना। serious health issue है ये malnutrition disorder, including stunted growth, आई प्रॉब्लम होती है उसमें, डायबिटीज, हार्ट डिसीज, सारे किस में आते हैं, malnutrition के प्रॉब्लम की वजह से होते हैं। एंड सो malnutrition disorder में हमको क्या देखना है, एनीमिया लाइक अ B12 एंड आयरन डिफिशियंसी, देन रिकेट्स, मैरस्मस, गोइटर, वॉशियोकर। तो इसके हमको ये सारे डिसीजेस के कॉजेस पढ़ने, कॉजेस है, सिम्टम्स है, प्रिकॉशन एंड द रेमेडी। ओके, नेक्स्ट इज अ कॉन्स्टिपेशन। Constipation means a condition which there is a difficulty in empty the bowel, using associated with hardened faces. Okay, constipation में क्या होता है? Constipation occur when the bowel movement become less frequent and stool become difficult to pass. Okay, समझ में आया what is mean by constipation? तो हमको डिफरेंट डिसीजेस देखने, लाइक कॉन्स्टिपेशन, पाइल, स्टारवेशन, एसिडिटी, फ्लक्चुएशन, फ्लैटुलेंस, पेप्टिक अल्सर। तो इसके भी हमको कॉजेस देखने, सिम्टम्स है, प्रिकॉशन एंड रेमेडी। नेक्स्ट इज ओबेसिटी। ओबेसिटी की हमको डेफिनेशन एंड कॉन्सिक्वेंसेस देखने। ओबेसिटी मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग ग्रॉसी फैट, और वी कैन से इन नॉर्मल टर्म ओवरवेट, है ना, ओवरवेट बोलेंगे ओबेसिटी मीन्स। ओके, मीन्स having a too much body fat, and it is different from being overweight, which means weighing too much, बहुत ज्यादा जब वहां पे फैट होगा, बहुत ज्यादा ओवरवेट हो जाता है तो हम उसको ओबेसिटी बोलते हैं। नेक्स्ट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइबर इन फूड्स। तो डाइटरी फाइबर इंक्रीज द वेट एंड साइज ऑफ, जो भी है हमारे डाइटरी फाइबर से क्या हो रहा है, सोल्यूबल फाइबर इज फाउंड इन ओट्स, है ना। कौन से फाइबर, किसमें कौन से जो फूड्स है उसमें फाइबर प्रेजेंट होता है, क्या इंटेक करना चाहिए, क्यों इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंस क्या है फाइबर इन फूड्स के। मीन सोल्यूबल फाइबर इज फाउंड इन ओट्स लाइक देन पीस, बीन, एप्पल, सिट्रस फ्रूट्स, कैरेट्स, है ना, जिसमें सोल्यूबल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। ओके,
So there are different types of fibers are present. Next is the significance of breastfeeding, एंड नेक्स्ट इज स्वाइन फ्लू है, डेंगू, तो उसके भी हमको कॉजेस पढ़ने। स्वाइन फ्लू सबको पता है ना, व्हाट इज स्वाइन फ्लू? स्वाइन फ्लू इज अ रेस्पिरेटरी डिसीज ऑफ पिग कॉज्ड बाय अ टाइप ए इन्फ्लुएंजा वायरस, है ना? पता है ना सबको स्वाइन फ्लू डेंगू जो है वो डायरेक्टली इन्फेक्ट नहीं करता है ह्यूमंस को। स्वाइन फ्लू वायरस, वी कैन से द फ्लू वायरसेस is a respiratory disease of pig caused by a type A influenza virus that regularly causes outbreak of influenza in pigs, and swine flu viruses do not usually infect humans. Okay, rarely infection occur होता है वहाँ पर। नेक्स्ट इज तो हमको यहाँ पे इसके भी डेंगू और स्वाइन फ्लू के कॉजेज, सिम्टम, प्रिकॉशन एंड रेमेडी देखनी है। नेक्स्ट इज अ बीएमआई कैलकुलेशन एंड इट्स सिग्निफिकेंस। सो टेल मी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीएमआई? पता है किसी को व्हाट इज बीएमआई? यस, बीएमआई मीन्स बॉडी मास इंडेक्स। ओके, body mass index calculation and its significance. So BMI is a person weight in kilogram divided by the square of height in meter. यहाँ पे बीएमआई का एक फॉर्मूला है जिससे हम वहाँ पे किसी भी पर्सन का वेट और फिटनेस पता कर सकते हैं। मीन्स अ पर्सन वेट इन किलोग्राम, किलोग्राम में हमको उसका वेट लेना है एंड डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ हाइट इन मीटर। ओके, so BMI is a measurement, that is ratio of your weight and height, and it is a good way to judge whether your weight is in healthy proportion to your height. Means हमारे height के according जो हमारा जो weight है वो normal है या नहीं, या हम obesity में आ रहे हैं, normal में आ रहे हैं, या malnutrition में आ रहे हैं। ओके, तो इस तरह से वहाँ पे हमको पता चलेगा जब हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज अ पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन। पब्लिक हेल्थ इज द आर्ट ऑफ साइंस एंड प्रिवेंटिंग अ डिसीज। पब्लिक हेल्थ मीन्स इट इज द आर्ट ऑफ साइंस जो क्या कर रहे हैं वहाँ पे, प्रिवेंटिंग अ डिसीज means prolonging a life and promoting a physical and mental health, like a sanitation, personal hygiene, control of infection diseases, organization of health services. Okay, occupational medicines in concern with the health, safety and welfare of persons in workplaces. Okay, so health में हमको क्या पढ़ना है? First topic is the definition of health. What is health? Then the need for the health education and health goal, physical, physician, physiological and social health issues. And next is the WHO. What is WHO? World Health Organization and its programs like polio, smallpox, malaria, and leprosy. So concept, brief account, and outcomes with respect to India. हमको ये सब पढ़ना है। Next is the ill effect of self-medication. Self-medication means human behavior in which the individual uses a substance or any oxygenous influence to self-administer. Okay, means the process of medicating oneself, especially without the advice of physician. वहाँ पे हम क्या करें, विदाउट फिजिशियन की एडवाइस लिए बगैर जो प्रोसेस होगा सेल्फ मेडिकेशन उसका बढ़ेंगे। ओके, द प्रोसेस ऑफ मेडिकेटिंग वन सेल्फ, ओके, especially without the advice of physician is called as a self medication. Next is the water and water supply. Water supply system get a water from the variety of location after a properties, uh, including a groundwater, you know, sources and
प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर. फर्स्ट टॉपिक इज द सोर्सेस एंड, जैसे कि सोर्सेस क्या है कि ग्राउंड वाटर है, सरफेस वाटर है. Next is the purification of water, small scale, medium scale, large scale, and rapid sand filters. आप purifications भी देखनी है. नेक्स्ट इज द वाटर फुटप्रिंट. वाटर फुटप्रिंट में कंसेप्ट देखना है, उसका कंसेप्ट, ब्रीफ अकाउंट एंड सिग्निफिकेंस. नेक्स्ट इज अ हाइजीन. व्हाट इज मीन बाय हाइजीन? हाइजीन किसको बोलते हैं? Hygiene means a series of practice performed to preserve health. Okay, performed to preserve health. So hygiene and health factor at home, personal hygiene, oral hygiene and sex hygiene. हमको थ्री टाइप्स के hygiene पढ़ने. Next is the radiation risk. Radiation risk is a radiation means energy released in the form of particles or electromagnetic waves. Okay, energy released in the form of particles or electromagnetic waves. So mobile cell, towers, electronic gadgets, these are the radiation risk. Okay, so we should stop here. Next lecture में continue करती हूँ. Thank you for joining. Left करो.